You are welcome. In Akash Hardware, you will find every item to give your house an attractive look. Here you will get the best quality tiles, granite, marble, sanitary ware, hydraulic modular kitchen, bathroom ware and much more. And the hardware of every brand is present here, whether it is Johnson, Century, Toyo or other big brand hardware. You are available here at fair price and rates. So come to Akash Hardware and give your house an attractive look. The Northeastern Hill University NEHU के कुलपति प्रभा शंकर शुक्ला ने हाल ही में NEHU छात्र संघ नेहुसू की मांगों का खंडन करते हुए, जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारियों को हटाने और शिलांग और तुरा दोनों परिसरों में प्रो वाइस चांसलर की नियुक्ति की मांग की गई थी, नियुक्तियों की अखंडता का बचाव किया। रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, अकादमिक ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी OSD और गेस्ट हाउस इंचार्ज को तत्काल हटाने के नेहुसू के आह्वान पर प्रतिक्रिया देते हुए शुक्ला ने कहा कि ये नियुक्तियां औपचारिक चयन प्रक्रिया के माध्यम से की गई थीं। उन्होंने कहा, रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार जैसे अधिकारियों को सनक या व्यक्तिगत विवेक पर नहीं हटाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये पद संस्थागत नियमों द्वारा शासित हैं और किसी भी कार्रवाई को उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। कुलपति ने यह भी कहा कि नेहुसू और नेहुता तथा नेहुसा जैसे अन्य संगठनों ने शिक्षा मंत्रालय और भारत के राष्ट्रपति सहित सरकारी अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायतें उठाई हैं, लेकिन इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, यदि कोई वैध चिंता है तो सरकार जांच का विकल्प चुन सकती है, लेकिन वर्तमान में मंत्रालय या राष्ट्रपति कार्यालय से इन मांगों का समर्थन करने वाला कोई संचार नहीं है। वहीं बुधवार को नेहू में सामान्य कक्षाएं पूरी तरह से बाधित रहीं, क्योंकि कुलपति द्वारा रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार और अन्य अवैध नियुक्तियों को हटाने में विफल रहने के विरोध में NEHUSU और KSU NEHU इकाई द्वारा परिसर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। छात्र विश्वविद्यालय के शैक्षणिक ब्लॉक के परिसर के बाहर अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी जारी रखे हुए हैं। NEHUTA, मेट्टा NEHU और NEHUNSA के सदस्य भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों को अपना नैतिक समर्थन देने के लिए शैक्षणिक ब्लॉक के परिसर में मौजूद थे। इस बीच विश्वविद्यालय के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों के स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे हैं। Thorough screening process and formal interview. Their roles and continuity in the service are governed by due process, not by arbitrary decision from any single authority, including the Vice Chancellor. As has been reported in the media, associations such as NEHUTA, NEHUSA and NEHUSU have already brought their concern to the government, including the President of India. If the government suspects any irregularities, including the President of India also, if the government suspects any irregularity, it may be considered forming an inquiry committee to examine the matter. However, as of now, there has been no communication from the Vice Ministry or the President Office to Vice Chancellor Office indicating such an action. This is a reality. Till now, it's important to note the termination of the government employees. Services cannot occur without valid and substantial reason. If there are indeed concern or reasons for any such actions, the process would begin with an inquiry, not an immediate termination. Regarding the roles of the OSD, Director College Development Council, I had approached many professors to consider taking the post. However,
no one gave their consent. College Development Council and as for guest house in charge. Nehu currently faces a shortage of non-teaching staff. All of you are already aware. Advertisement for the non-teaching staff position have already been issued. And although the National Testing Agency, I think all of you might be aware about the National Testing Agency, has declined to conduct the non-teaching recruitment exam, we have proceeded with tendering for alternative agencies. Multiple agencies have shown interest, and once the registrar office opens, currently closed due to protest. These files will move forward, and when the recruitment process is successfully completed, the role of the guest house in charge will naturally conclude and new guest house in charge will be appointed. This is the answer of the first question already raised by the different unions. Yes. About the appointment of the Pro-Vice Chancellor, you might remember my first or second press conference. There is a line in our act. Every Pro-Vice Chancellor. Anyone in position to define this line? What is the real meaning of the every Pro-Vice Chancellor? A Vice Chancellor can appoint 2 Pro-Vice Chancellor, 1 Pro-Vice Chancellor, or 3 Pro-Vice Chancellor. Nothing is mentioned in our act. At present, Nehu already have one campus, that is in Tura, and another campus, or you can say the Constituent College, is the name of Pandit Deen Upadhyay Skill Development College, running in Joy. So at this time, I am not authority to clear that how many Pro-Vice Chancellor can appoint. Either the government can clear, so also wrote a letter, since that I had discussions to different bodies, I will show you the letter also. Yeah, this letter. And 3 to 4 times, and last letter sent to the Government of India on 4th September 2024. And waiting the reply